Yes, good morning, students. In day 2 class, in day 1, already we have seen about basics of Java as what is Java, why use Java, Java क्या होता है और क्यों यूज कर सकते हैं. Now, in day 2, we will understand the fundamental of Java programming, in which we will understand compilation flow, parameter used in Java program, and in very brief output statements, data types, variables, and lastly identifiers. So these are our highlights of our day 2. Now we will understand very first the flow of Java programming. How we can understand the compilation flow. So here we have first this figure. In this figure you try to understand you have Java code, and the name of this source program is simple.java, and this simple.java basically this is written in the high level language, so this is readable by only human, and this source program cannot directly understand by our computer. So we have to do translation. Clear? As let you know English, and I am suppose teaching in the Hindi, so you required some translation from Hindi to English and vice versa, English to Hindi. So here in our computer we require translator as a compiler, and due to this compiler our source program will transformed into the translated into the bytecode. इसे bytecode में हम लोग बदल सकते हैं. And the name of file of this bytecode is only extension will change. Instead of this Java, you have to make a simple dot class. So this is the one fundamental we have to understand कि अगर हमारे पास जावा का प्रोग्राम है जिसका नाम है सिंपल डॉट जावा, तो उसे कंपाइल करने के बाद बाइट कोड जब बन जाएगा तो आपको मिलेगा सिंपल डॉट क्लास फाइल. ओके, इसी को थोड़ा सा और मैं समझाना चाहता हूं. लेट यू हैव बाय दिस फ्लो, तो whenever you want to make a source program, so you required one text editor. In this text editor you can write your program, that actually already you have written in your pages by your pen. So this program that you have written, this is according to your algorithm, this is according to flowchart. ठीक है, तो this program you are writing in the text editor, say notepad, or you can also use the any true editor in which there is no control commands are there. For example, you can't write your program, source program, in the MS Word or the doc file, because that doc file also contain some additional feature of Microsoft Word.
तो हियर वी विल यूज द टेक्स्ट एडिटर, हमें टेक्स्ट एडिटर यूज करना चाहिए और इट इज ए मस्ट एंड वी हैव टू understand कि only written program in this text editor will only compile by the compiler. Okay, now you have to save this source code in the your Java extension file name. Say here file name .java, it is a actually format of this source program. In this file name you can write like a simple को हम यहाँ पर लिख सकते हैं or according to your task. Suppose you want to make a program for addition of two number, so you make a your this program as a add.java. Clear? Suppose you are making a big program, big project like a calculator, so you have to write here calculator.java. So this file name should be according to your task. So here after writing this program and saving in this name file name .java, we have to use the one compiler, and using this Java compiler we will actually translate our source program to this your bytecode program. So this bytecode program actually have a format of file class name डॉट क्लास. तो जो भी हमने सोर्स प्रोग्राम में क्लास बनाई थी, बिकॉज यू नो वेरी वेल एवरी प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग ए प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग वेलकम, दिस इज ए वन लाइन प्रोग्राम, तो फॉर दैट आल्सो यू हैव टू मेक ए क्लास. तो वॉट एवर द क्लास इन द सोर्स कोड इज देयर, उसी का नाम हमको यहाँ पे एक्सटेंशन में मिलेगा. बाइट कोड का जो फाइल होगी उसे हमें देखेंगे तो वी विल गेट ए इन आवर दिस करंट डायरेक्टरी, यू विल गेट ए क्लास नेम डॉट क्लास इज देयर. ठीक है, तो लेट वी हैव ए दिस फाइल नेम डॉट जावा and here we are getting a class name dot class. Okay, now after that you have a interpreter, because this class file will not give input output. ठीक है, because this is a only your intermediate file. So by this intermediate file again you have to use one more translator that is known as a Java interpreter. ठीक है, now this Java interpreter is nothing but it translate or it actually convert your bytecode to the according to the your run program in the operating system. ठीक है, through the JVM, Java Virtual Machine. So according to that we will convert our bytecode and we will get a input and output in whatever the your नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर विंडो है तो विंडो में मिलेगा, अगर लाइनिक्स है तो लाइनिक्स में मिलेगा, मैक है तो मैक में, मतलब वॉट एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल गेट ए इनपुट आउटपुट. फॉर एग्जांपल आपने ऐड प्रोग्राम बनाया, इन दैट ऐड प्रोग्राम यू वांट टू इनपुट टू नंबर से ए एंड बी एंड देन यू हैव टू गेट ए कैलकुलेशन a plus b and then you want to output the your a plus b. So this all you will get after this interpreter. ठीक है, so here we are using the two important translator. One is your Java compiler and second is your Java interpreter. So both actually simultaneously will run one by one. Okay, now the last this flow in figure we can also understand कि this is the your class file. ठीक है, तो class file you will be actually very first you have to write in the your notepad or in the text editor. Then we required our class loader that will be load the your class and we have to verify the bytecode and then we will run the interpreter, and by this interpreter we will get a runtime environment and then you will run your program in the native hardware. ठीक है, so this is the flow कि how we are running our this Java program. Okay, तो इस स्लाइड से हमने ये समझा कि फ्लो कहाँ से आपका एक्चुअली सोर्स कोड टू टारगेट मशीन तक जाता है. ओके,
Now we will understand वन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम. अब मैं फंडामेंटल प्रोग्राम से आपको समझाना चाहता हूं कि हाउ वी विल राइट ए अवर जावा प्रोग्राम. तो here we have a instruction कि Java does not support default argument like C++. तो हमें default argument यहाँ पर नहीं देना है. Then Java does not also support header file like in C++. You are using the include iostream.h. Now here we will use the instead of this include we have a import. ठीक है, through import we can, this is a keyword, through import we can include different classes and the different methods. So this we can easily include in our this Java program. So here in the C++ we are using additional the namespace, then we are writing our main function. So this is the your main function is there. ठीक है, the name main function is with the main this parenthesis. So this is also here in here, this is the your main with this parenthesis. ठीक है, so this is about the your similarity in the C++ and the Java. Now you are writing this output statement. So this output statement basically we have this hello C++. So for that we are using the out object, that is the C out, and this C out we are taking from the class iostream.h. Okay, so this is a syntax ki how we will output this hello C++. So here hello C++ is a string constant. Okay, now in the Java we will use the system.out.println. Okay, now in next slide we will also understand word by word why we are using this class, why we are using public, static, what each word we will understand in the next slide. Okay, now here I am using this output, that is the string constant, as a hello Java. तो यहाँ हेलो जावा को हम लोग आउटपुट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने इस तरीके से सिंटेक्स बनाया है. नाउ दिस इज द यूर मेन प्रोग्राम, है ना. ये क्या है आपका मेन प्रोग्राम, जो कि ये आपका जो यहाँ पर था इन द C++, है ना. दिस इज द बेसिकली यूर इन द C++. यहाँ पर हमने ये चीज लिखी थी. नाउ दिस ऑल मेन प्रोग्राम, for the main program you are using this class, है ना. तो this is the your class. In this class you are writing the your main program. Now here in the C++, in C++ we are making a file name as a simple.cpp. Now here we are making a class name as a simple. That's why we will use the source program as a simple.java. Okay, so this is the actually requirement in the your Java program. So we will understand more word by word of the Java parameter. जो हमने क्या लिया है, क्यों लिया है, that I will explain you. But in this slide हमने देखा कि C++ में किस तरीके से एक हेलो प्रोग्राम बनाते हैं और वही हेलो प्रोग्राम हम जावा में कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो we will understand more explanation of this parameter. अब मैं पैरामीटर को आपको बताना चाहता हूँ. In this parameter you can understand each word one by one. Okay, now before that I will explain कि how we will run this program. ठीक है, so this is the one way कि online you can run this program very easily. Let you have this your URL in which you, if you will type in the your explorer, so you will get a one your editor. In this editor the name of editor is main.java, and here this is the editing area, and you can write your program as I am writing. This is the main program, and this is the area for getting your input and output. Now here we have a important commands like your run is there, debug is there, stop, share, save, then we have a language. So in any language you can run here, like C, C++, Java, Python, whatever you want, you can select. Your pop-up button is there, you can select, and this is the your what known as this
this is the setting. In this setting you can change this color, ठीक है, background color, font, you can change this all from this setting. Okay, so this is about the your virtual compiler is there. So here we will make a online program, and as I am writing the same program that already we have discussed in the previous slide, हमने पुरानी स्लाइड में देखा कि हमको जो प्रोग्राम मेन का लिखना है, यहाँ पर हमने इसको as it is लिखा हुआ है. Now here whenever you will run this program, जैसे इसको हम यहाँ पर रन करेंगे तो you will get here hello world, तो आपको यहाँ पर hello world मिलेगा. तो दिस इज द सिंपल स्टेप्स, ठीक है, यही मेरा सिंपल स्टेप्स है आपको समझाने के लिए कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल. तो हियर वी आर गेटिंग दिस आउटपुट, ठीक है, एंड दिस इज द योर कंप्लीशन of the your completion of the program, कि program finished with the exit code 0 and press enter to exit console. So this is about the your how to run this simple program. I will also explain how to run command by command. If you want the eclipse, I can also explain the eclipse. So whatever you want, you please give me the hint in which level you want to explain how to run this program. I will explain it. Okay. Now my commitment to explain each parameter, each word of your written in the program Java. So we will understand one by one. Okay, so here we have a first class, we have a public, we have a static, we have a void, main, then string argument, then system out, print line. So this type of the words already we have used in the previous program. ठीक है, now one by one मैं आपको explain करता हूँ. Let आपने सबसे पहले class एक कीवर्ड यूज किया था. तो क्लास क्या वर्ड है? एक कीवर्ड है. तो कीवर्ड इज ए यूर प्रीडिफाइंड वर्ड, ठीक है, जिसको आप एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते. नाउ इट इज यूज टू डिक्लेयर ए क्लास इन ए जावा. ठीक है, आपको कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी बनानी है तो आपको क्लास बनाना पड़ेगा. तो क्लास के लिए आपने यूज किया क्लास इन द जावा. तो यहाँ पे आपको जावा का जो क्लास बनाना है उसके लिए एक आपके पास में कीवर्ड है, उसी के द्वारा आप उसको बना सकते हैं. एंड द सिंटेक्स ऑफ क्लास इज you have to use the curly braces. ठीक है, now we are using the word public. तो public भी क्या है हमारे पास? is a keyword है. now this is the basically access modifier. आप अपने जो भी वर्ड को, जो क्लास को ले रहे हैं, फंक्शन को ले रहे हैं, तो उसका एक्सेस क्या है, किस तरीके का एक्सेस रहेगा, किस तरीके की उसकी विजिबिलिटी रहेगी, क्या वो विजिबल टू ऑल होगा या विजिबल टू यूर करेंट मेन प्रोग्राम रहेगा या करेंट क्लास रहेगा या करेंट आपका ऑब्जेक्ट में रहेगा. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. तो वी हैव ए पब्लिक. तो पब्लिक का मीनिंग क्या है? विजिबिलिटी, दैट इज द विजिबल टू ऑल. Now you can also make private, you can also make protected. ठीक है, like that concepts are there. If you are not using this, so the default is there. Okay, now the question what is the use of static? Why we are using the static in a main function? So static is also a keyword, and it is also a keyword. In C and C++, you are aware about these four important words. One is the auto, second is the register, third is the static, and fourth is the your extern. तो हम चार चीजें जो C++ में आपने सीखी होंगी, जो स्टोरेज क्लास के कंसेप्ट में आती हैं. फर्स्ट इज द ऑटो. ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के लिए रहता है. देन रजिस्टर, इफ यू आर यूजिंग द हीप एरिया देन यू हैव द रजिस्टर. एंड व्हेन एवर यू आर यूजिंग द एक्सटर्न मीन्स यू वांट ए वेरिएबल फ्रॉम द outer program, जो दूसरे प्रोग्राम से आएगा, that is the extern. Now static means whenever you want to retain value, whenever you will be in the function, whenever you will come to the function, whatever the your last value you will get in the next side. So this is called as static. So here we are using this static. तो we declare any method as a static. हम किसी को भी method को static बना सकते हैं. It is known as a static method. तो वो जैसे static word लिखेंगे तो that method will become as a static method.
द कोर एडवांटेज क्या है स्टैटिक मेथड का, देयर इज ए नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक ए स्टैटिक मेथड. ठीक है, दिस इज द एक्चुअली एडवांटेज ऑफ द योर स्टैटिक मेथड. द मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम. तो मेन मेथड आपका जेवीएम उसको रन करेगा, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो जो 1 by 1 लिखे हैं उसे वो एग्जीक्यूट करेगा. एंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा मेन को, अभी हमने वेलकम प्रोग्राम वेलकम हेलो वर्ड रन किया, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी. ठीक है ना, सो इट सेव द मेमोरी, इट सेव द मेमोरी. विदाउट ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, प्रोग्राम अपना क्रिएट कर दिया था. ओके, नाउ कम टू द वर्ड void. Why you are using this void? तो void is simply, you are already aware about this void. हम void को जानते हैं, हमने पुराने C और C++ में void को बहुत यूज किया है. तो क्यों यूज किया है भाई, आपको भी पता होगा. जब आपको बेसिकली ये क्यों है, रिटर्न टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपके मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा. और अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो यू शुड यूज void. ठीक है, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. नाउ मेन, हमने भाई मेन लिखा है, तो दिस इज द यूर वन ओनली कमिटमेंट टू द प्रोग्रामर कि यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट मेन प्रोग्राम. वट एवर यूर सब प्रोग्राम्स आर देयर, तो एक से ज्यादा भी फंक्शन मेथड हो सकते हैं, लेकिन सब में से एक ही मेथड जो होगा वो मेन होगा, बिकॉज दिस इज द एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन विद द एवरी कंपाइलर कि दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन एंड वॉट एवर विल बी द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू दैट द ऑल कंपाइलेशन विल प्रोसेस द यूर रिक्वायरमेंट. ओके, तो दिस रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम रहेगा. ये आइडेंटिफायर है, लेकिन ये आपका क्या है, कीवर्ड नहीं है, याद रखेंगे. इट इज नॉट ए कीवर्ड, इट इज नॉट ए प्री डिफाइंड, बट इट इज सिमिलरली द प्री डिफाइंड कंसेप्ट आर देयर कि आपको मेन लिखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अवर होम दे आर द मेनी डोर्स आर देयर, बट वी हैव टू से कि दिस इज द मेन डोर. फ्रॉम दैट मेन डोर यू हैव टू input and output. Okay, now the next is the string argument, or you can write in this method in this pattern also, both are the same, and this is used for the command line argument. अब आपने कोई भी इनपुट देना है तो आप दे सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर अभी हेलो वर्ड लिखा, तो मैं वहां पर आपका नाम भी लिख सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूर नेम इज मोहन, तो मोहन वेलकम वर्ल्ड, लाइक दैट. तो वेन एवर यू विल रन दिस प्रोग्राम यू गिव द command line argument as a that Mohan. Okay, now the system out print line. So what is the system out print line? The system out print line in this instruction, your this will be used for the print statement. ये output के लिए हम use कर रहे हैं. तो here we are using the 3 words system out print line. Now what are these 3? तो सबसे पहले देखिए system क्या है, it is a class है. ठीक है ना, सिस्टम क्या है, इट इज ए क्लास. नाउ व्हाट इज द आउट, आउट क्या है, आउट इज ए नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट. एंड द प्रिंट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास, क्लास है ये, उसका ये ऑब्जेक्ट है. एंड द प्रिंट लाइन पैरेंथेसिस क्या है, इट इज ए योर नथिंग बट मेथड. इट इज ए मेथड and this method actually use of this class print stream class का ये आपका क्या बन गया, इट इज ए मेथड बन गया. ओके, तो दिस इज द वे कि हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द पैरामीटर यूज्ड इन द जावा प्रोग्राम. ओके, तो ठीक है, चलिए हमने इस स्लाइड से ये सब चीजें क्लियर कर दी हैं. नाउ वी शुड रेडी टू मेक ए अवर प्रोग्राम. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस प्रोग्राम. थैंक यू टू ऑल.